लाइट्स कैमरा एनिमेट। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैंने इतनी वियर्ड एंट्री क्यों की है, क्योंकि आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो इतने स्पेशल हैं कि ये लाइन कहने के लिए मैं कल से प्रैक्टिस कर रहा था कि लाइट्स कैमरा एंड एनिमेट, क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं दे आर एनिमेशन एक्सपर्ट्स। और प्लीज वेलकम करें मोहतशिम सर और मरियम सर। हाउ आर यू? Assalamu alaikum. Thank you so much for inviting us. How are you feeling at Peshtawad and Agriculture University? Maryam, you first. Frankly, we're so excited. It's the first time that I get introduced to the Pakistan universities, so the whole environment is so exciting for me. Okay. So basically, who is Mohtishim and Maryam? All right. मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं पहले. मोहतशिम अली और आई एम अ फिल्म डायरेक्टर एंड एनिमेशन प्रोड्यूसर और पिछले 12 साल से वी आर प्रोड्यूसिंग एनिमेशंस एंड फिल्म्स एंड रिलेटेड टू दिस इंडस्ट्री. एंड लाइकवाइज मरियम, शी इज़ मास्टर्स इन सिनेमा, आई एम बैचलर्स इन सिनेमा. और मरियम जो हैं, शी इज़ Salam Kids TV is our platform, by the way, and she is the founder. She's a co-founder, or she's also a filmmaker, researcher, yeah, writer, researcher, editor, yeah, and film director. Okay. अच्छा, फिल्म मेकिंग करते करते आप लोग की एंटरप्रेन्योरियल जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? Filmmakers are entrepreneurs. I think so. You know, filmmakers, they don't sit in one place and work for a certain company. They have that spirit of going out and, you know, experimenting new things. So I think this is from where it came. We were working in TV at the beginning of our journey, but then we realized that, you know, no, we need to do something bigger. Let us make our own films first, and then, you know, let us make our own company. And from there, the things, you know, went on. Yeah. So, अच्छा, मैं ये बता दूं, वैसे मरियम शी इज़ फ्रॉम लेबनान. okay. और हमारी जो फिल्म स्कूल स्टडीज़ हैं, वो हम लोगों ने आर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान से की हैं. और उसी के बाद जो है, यू कैन से कि जो हमारा थीसिस फिल्म थी, वो जो है एक तरह से बाइस बनी कि हम लोग जो है वो अपना जो एक ट्रेडिशनली हम लोग स्टूडियोज़ के लिए काम कर रहे थे, वहाँ से निकल के भी लाइक वो फिल्म्स इतनी अच्छी बन गई कि वी कुड सेल देम, एंड देन वी रियलाइज़ कि ऑलराइट, वी कैन जस्ट कैरी ऑन विद दैट. तो फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो करते-करते वी स्टार्टेड लाइक बिल्डिंग आवर ओन स्टूडियो. तो और वो तकरीबन 12 साल का एक्सपीरियंस गेन करने के बाद देन वी लाइक प्लान टू मूव बैक टू पाकिस्तान और यहाँ पर कुछ एसेंशियल करने का जो है वो इंशाल्लाह इरादा है. ओके, ग्रेट. आप लेबनान से हैं और आप लोगों ने ईरान के अंदर पढ़ा, और ईरान में पढ़ने के बाद यू कैन मूव टू इंडिया, यू कैन मूव टू एनी काइंड ऑफ सिटी जहाँ पे अच्छी फिल्म मेकिंग होती है, एनिमेशन होती है. बट पाकिस्तान में अभी इतना एनिमेशन का स्कोप नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इतना काम भी नहीं हो रहा, और लोग लोकल कंटेंट को इतना प्रमोट भी नहीं करते. अभी अगर हम घरों के तौर पे देखें, तो व्हाट्स द रीजन कि आप लोग पाकिस्तान जहाँ तक इंडस्ट्री की बात है, तो व्हेन इट कम्स टू द स्कोप, हम स्कोप को जो है अगर उसमें देखें, क्योंकि स्कोप को जब भी हम स्कोप की बात आती है तो हम लोग आ जाते हैं कि जी वो नौकरी और अर्निंग और इंडस्ट्री कैसी चल रही है वगैरह वगैरह. जहाँ तक बात है यूज़र की और कंज्यूमर की, तो वो तो है ऑलरेडी. ये मीडिया कंजम्पशन की जब बात आती है, और द टाइप ऑफ वर्क दैट वी आर डूइंग नाउ, और जो प्लेटफॉर्म हम लोग लॉन्च करना चाह रहे हैं, जो बना रहे हैं, जिस पे काम कर रहे हैं, तो वो बच्चों से रिलेटेड है. ठीक है. और इस चीज़ का एहसास हम लोगों को उस वक्त हुआ जब हमारे अपने बच्चे हुए, और हम लोगों ने फिर शिफ्ट किया अपनी लाइव फिल्म से और डॉक्यूमेंट्री फिल्म से जो है हम लोग एनिमेशन तरफ. तो बहरहाल जो एक्सपीरियंसेस आपके होते हैं वो आपको ले आते हैं किसी और ट्रैक पे. तो एनिमेशन जो है वो और ख़ासकर कोरोना जब आया तो वैसे ही लाइव एक्शन और सारी शूट्स वगैरह सब बंद हो गई. तो वहाँ से जो है वो हमें एक और बहाना मिल गया कि हम प्योरली फोकस्ड रहें एनिमेशन के ऊपर. तो मीडिया कंजम्पशन कोरोना के टाइम में वैसे ही कई गुना बढ़ चुकी थी, क्योंकि सब घर में थे, बच्चे भी घर में थे, और बहुत सारी यानी यू कैन से कि मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्री जो ऑनलाइन शिफ्ट हो सकती थी वो हो गई थी. ठीक है ना.
तो उस हवाले से हमें अंदाज़ा हुआ कि कितनी बड़ी मार्केट है और कितनी डेफिशिएंसी है इस कंटेंट की, ख़ासकर बच्चों के लिए। और एंड व्हेन इट कम्स टू द टाइप ऑफ मीडिया कंजम्पशन, तो वो फिर आप आके एनालाइज़ करते हैं कि यार हमारे पास अपने बच्चों को दिखाने के लिए कल्चरल और वैल्यूज़ बेस्ड आया कोई चीज़ है और किस मिकदार में है। देन यू वुड अंडरस्टैंड कि कितना वैक्यूम है, कितनी डेफिशिएंसी है और गुड क्वालिटी कंटेंट जो है वो है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है, बहुत कम है। इतना कम है कि वो उस ज़रूरत को जो है वो पूरा नहीं कर रहा। तो I think we came to Pakistan with a vision more than, you know, a scope. Okay. So we came here just for our own kids first, because our kids didn't know like Urdu, they wouldn't speak Urdu, they were not like into like Pakistani or cultural content. So we came here for them, one. And then we had that vision that just like our kids and the problem that we are facing with our kids, you know, a lot of families, our friends, they are facing the same problem. So let us create that vision for the Pakistani community also. So I think it was more like that, and not like there is a scope, there is money or not, or people would appreciate us or not. Yeah, so that's वक्त की ज़रूरत। आपका मेरे ख्याल से जो विजन सुन के ना मुझे दिल से बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि आजकल पाकिस्तान के इतने स्ट्रेसफुल टाइम में आप जैसे लोग ही पाकिस्तान की होप बन रहे हैं कि हम कुछ ना कुछ कभी ना कभी तो कर लेंगे। अभी हम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन इन फ्यूचर वी विल गेट बेटर। तो इंशाल्लाह। आप लोग एक इंक्यूबेशन सेंटर का भी पार्ट है, जिसका नाम NICF है, जो कि फैसलाबाद में काफी पजीराई हासिल कर चुका है। तो आपको उसके बारे में किस तरह से पता चला और आप किस तरह से उसको ज्वाइन किया? आप Like NIC, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर क्वाइट लकी कि हमें जो है वो NIC नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर फैसलाबाद में जो है इंक्यूबेट होने का मौका मिला। बच्चों के लिए कुछ करने का विज़न जो है वो प्री कोरोना ही से एग्ज़िस्ट कर रहा था, लेकिन एक आइडिया को फॉर्मलाइज़ करके आपको एक एग्ज़ीक्यूशन फ़ेज़ के अंदर लाने के लिए इट्स अ होल प्रोसेस, ठीक है? ऑल्दो मैं वहाँ पर रहते हुए भी ईरान में बेशक वी वर रनिंग अ बिज़नेस, लेकिन प्रोडक्शन अपने आप में एक बिज़नेस है, बट व्हेन इट कम्स टू अ स्टार्टअप और एन आइडिया कि जिसको उसको आपने जो है वो एग्ज़ैक्टली उसको बिल्कुल स्क्रैच से लेकर एग्ज़ैक्टली उसको आपने जो है वो ऐसे फ़ेज़ तक पहुँचाना है कि वो प्रैक्टिकली आप इम्प्लीमेंट कर सकें, तो वो पूरा एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस अभी हम लोगों ने फ़ॉर्मली नहीं सीखा था। तो वो हमें यहाँ पर आके NIC में इंक्यूबेट होके जो है हमें फ़ायदा हुआ कि वो जो मिसिंग एलिमेंट्स थे, वो यहाँ पर आके हमें वो मेंटोरशिप और बाकी चीज़ों के थ्रू हो गए। कहाँ से हमें पता चला? दैट केम आउट ऑफ अ कोइंसिडेंस एक्चुअली। और NIC फैसलाबाद में आ रहा है, आई न्यू अबाउट इट। NIC करता क्या है एग्ज़ैक्टली मुझे इसका इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था। और फर्स्ट कोहॉर्ट के लिए मैंने अप्लाई किया था, डिडन्ट हियर बैक, एंड देन सेकंड कोहॉर्ट की लास्ट डेट के लास्ट 15 मिनट्स रह गए थे एप्लीकेशंस के, और उस लास्ट 15 मिनट्स में मैंने कोई 5-6 स्टार्टअप आइडियाज़ जो हैं वो मैंने अप्लाई किए थे। लेकिन उसमें ऑब्वियसली प्रायोरिटी जो थी वो इसी के जो थी वो इसी OTT प्लेटफ़ॉर्म के लिए थी, सलाम किड्स टीवी के लिए। And then we got back, like the news from NIC. So that's how it happened from the Instagram, by the way. Yes. ओके, बेसिकली आजकल जो हम लोग एनिमेशन की बात करते हैं, स्पेशली बच्चों की एनिमेशन की बात करते हैं, वो डिफरेंट टाइप की एनिमेशन मौजूद है, जिसमें हम एनिमीज भी हैं और उसके बाद अमेरिकन कंटेंट भी है, इंडियन कंटेंट भी है, और अभी तो हमारे लोकल कंटेंट भी कुछ बन रहा है। तो आपको क्या लगता है कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द कंटेंट दैट इज गोइंग मेकिंग इंटरनेशनली और जो हमारा लोकल कंटेंट बन रहा है? I think that the international, you know, content does not go well with the Pakistani culture, or even the Muslim culture, because Pakistan is a Muslim country. So it's so provocative. It has so much violence. We watch anime. We know what does it have. Fine. So we think that that's not the type of content our kids should be watching. So I don't let my kids watch Cartoon Network, for example, or Disney. They don't know about it because I've never put it on. I know that it has that negative effect on their brains, negative effects on their values.
So they're going to become more like the whatever the Western value is based on. So that is why we feel that no, there should be another type that goes well with our own culture. Let us speak about our own values. What are the things that we value the most? Like, for example, family, like, how to deal with friends, how to care for the nature. These type of values, because this is how we can bring like Pakistan and the Pakistani community up. It starts with the kids. So if our kids actually learn these values from that like young age, I think the time when they grow up, they're going to become better citizens, and they won't flee away on the first like economical crisis the way it's happening now. So I think that's it. The time we were working on this idea, और जब हमारे अपने बच्चों को कंटेंट दिखाने की बात आई, तो जो फ्री अवेलेबल कंटेंट है इस वक्त, because mostly we tend to opt for some free options at first place. YouTube है for example, तो या तो कंटेंट वो या तो बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज्ड कंटेंट है, या फिर बहुत ज़्यादा इंडियन कंटेंट है, या फिर जो है वो टू रिलीजियस प्रीची कंटेंट है, तो जो कि शायद एज अप्रोप्रिएट नहीं है बच्चों के लिए, जो कि छोटी एज से आप जिनको टारगेट कर रहे होते हैं। तो वी वर्क सो मच ऑन दी साइकोलॉजी ऑफ किड्स, और जो है वो किस तरह से उसको जो है एज अप्रोप्रिएट बनाया जा सकता है, इन चीज़ों के ऊपर हम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो दैट्स गोना बी अ स्पेशलिटी अबाउट द कंटेंट दैट वी वुड बी वर्किंग ऑन। तो बेसिकली आपका जो मतलब, मैं जहाँ तक आपके सलाम किड्स टीवी के बारे में पढ़ रहा था, यू गाइस गोइंग टू प्रोवाइड ethical education with an entertainment to the students in the form of animated videos. तो अगर हम लोग, आप लोगों की जो टारगेट ऑडियंस है वो तो बिल्कुल ही यंग बच्चे हैं जो कि आपको कंटेंट कंज्यूम करेंगे। अगर मैं अपनी जेन जी की बात करूँ ना, तो जेन जी जो है वो एक कुछ है कि उनके अंदर एक फॉल्ट है कि वो हर चीज़ को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं और मजाक के मामले में लेते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि हेल जोक्स आजकल बहुत फेमस है, तो हेल इज अ स्केरी प्लेस बट यू मेक जोक अबाउट इट। तो अगर आप मतलब इसके बारे में लेके चलें कि एथिकल एजुकेशन के ऊपर लेके चलें, तो आप लोग क्या चीज़ प्रूव करेंगे कि ये एक मीम ना बन के रह जाए, कि एक ये अच्छा प्लेटफॉर्म बन जाए? क्योंकि अगर पाकिस्तान में अगर हम लोग कुछ ऐसी एथिकल वीडियोस की बात करें कि जैसे कि आई डोंट रिमेम्बर द नेम, देयर इज अ वेरी फेमस कार्टून, उनका बेसिकली यही विजन था ना कि वो इस्लामिक एजुकेशन देंगे, कि दुआ वगैरह देंगे, अब्दुल बारी आई रिमेम्बर, but it ended up being like a meme, so no one wants to be a meme. तो आप लोग उसको किस तरह से बनाएंगे कि वो आइडलाइज बच्चे करें कि I want to be a guy like them? Okay. First of all, there is a very big difference between the content that you make for younger kids and the content that you make for kids that are teenagers, like 12 years and above. So definitely the time when you were speaking for that generation, for that teenagers, you're not going to come and make the content the same way. We think that kids, the time when they're small, they are more receptive to positive values more than the time when they grow up. That is why we're working on that very young age. So they receive beauty, they receive, good values. This is, it's more, it goes more with their whatever what we call fitrat. So it's so close to their fitrat. That is why they accept it. That is why they watch it. But for the elder generation, like 12 years and above, it's going to be a very different game and a very different story. And it's going to be our next phase. It's not going to be now. So those kids who would be, brought up with our content, they're going to be, ready for whatever comes next, I think. Okay. So do you want to add something in it? हम लोगों ने इस प्लेटफॉर्म के लिए अभी कंटेंट को लेके फेजेस बनाए हैं, और फर्स्ट फेज में हमारा टारगेट 3 till 12 ही होगा, इसी वजह से कि आप जो है क्योंकि सोशली साइकोलॉजिकली और जेंजी की आप बात कर रहे हैं, एक पकी पकाई चीज़ को जो है वो उसकी रेसिपी और उसकी जो है वो मेंटालिटी को चेंज करना काफ़ी मुश्किल काम है, निस्बतन एक जो है ऑन द वे प्रिपेयरिंग, और जिस तरह तरबियती मरहले के अंदर अगर आप चीज़ें जो है बच्चों को छोटे लेवल से शुरू करें, तो वो उनकी इंट्यूशन में और उनकी फितरत का हिस्सा बना के आप उनको वो करें। सो वी आर वर्किंग ऑन लाइक अ लॉन्ग टर्म
गोल एंड अ प्लान कि हम यहाँ से शुरू करेंगे और जो आइंदा आने वाली नस्लें हैं दे वुड बी डिफरेंट इंशाल्लाह, दे वुड बी लाइक सलाम के प्लेटफॉर्म से तरबियत याफ्ता जो हैं ओके ओके वो होंगी। और एजुकेशन का जहाँ तक है, यस, एंटरटेनमेंट वुड बी द की, क्योंकि छोटी एज से आप शुरू करेंगे। अ, इस वक्त जो है हम लोगों को चैलेंज जो है वो 1+1 2 सिखाने का चैलेंज नहीं है, ठीक है। देयर आर टू मेनी थिंग्स दैट्स ऑलरेडी हैपनिंग। और लेकिन जो तरबियती है यानी तालीम पर ही सारा फोकस है, तरबियत पे फोकस नहीं है। सो तरबियत इज़ द एलिमेंट दैट लाइक वी आर वर्किंग ऑन। और वैसे भी जिस तरह से टेक्नोलॉजिकल दौर अभी चल रहा है, आपके सामने ही है कि बच्चा जो है वो अभी शायद उसको चलना भी नहीं शुरू करता, लेकिन उसको जो है ना वो मोबाइल पे जो है ना उँगली फेरनी आती है उसे। तो दैट्स द जनरेशन दैट वी आर लाइक फेसिंग। एंड और उनके लिए फिर आपको जो है उस स्टेज से उनको जो है आपको लेके चलना है। तो इस ग्रोइंग टेक्नोलॉजिकल एरा में बहरहाल हमें जहाँ पर पुराने ज़माने में और हम लोगों के दौर में भी जिस तरह से अब बहरहाल फैमिली सिस्टम और लाइफ़स्टाइल भी चेंज होता जा रहा है। तो एक ज़माना था कि जब ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं, दे यूज्ड टू बी द सोर्स ऑफ तरबियत, ठीक है ना? इन अ हाउसहोल्ड। तो अब वो भी चेंज होता जा रहा है, क्योंकि बच्चे भी प्रेफ़र करते हैं उनके हाथ में मोबाइल रहे। मदर्स भी जो हैं मसरूफ़ हैं, घर के काम हैं, वो भी मोबाइल ही पकड़ाती हैं बच्चों को, टैबलेट्स, मोबाइल या टीवी, स्मार्ट टीवीज़। और जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनकी तरफ अटेंशन, अब वो गैप आ गया है, ठीक है? जिस तरह हम लोग पहले उनके साथ रहते थे, तो अब वो गैप एक है। इंटरेस्टिंगली जो अभी नेक्स्ट जो हम फ़ेज़ अभी देख रहे हैं, वो है कि ग्रैंड पेरेंट्स आर ऑल्सो गेटिंग बिज़ी विद द मोबाइल्स, ठीक है ना? तो वो भी दौर अब, तो उनको भी जो है ना बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि वो भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, अपना सन्स और डॉटर्स Children, के चिल्ड्रन के साथ जाके अपना वो करें, टाइम गुज़ारें, वो भी मोबाइल में ही unfortunately. मसरूफ़ हैं। तो देयर इज़ अ गैप, ठीक है? तो अब the tablets, the media, that has to become the grandparents and do the tarbiyat of the kids. It's part So of life. You know, now technology is part of life. So yeah, we cannot come and we cannot say, cut it off. no, there not, for example, no mobiles, no TV, no tablets. It's just, no, we have to create something that would Alternative. help us in that journey, I think. So yeah, that's the alternative that we're going to be bringing, inshallah. तो बेसिकली आप लोगों का एनिमेशन के अंदर और सिनेमैटिक के अंदर एक्सपीरियंस है। हमारे पाकिस्तान में भी और इवन हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर काफ़ी लोग हैं जो कि एनिमेशंस में काम करना चाहते हैं, सिनेमा में काम करना चाहते हैं। तो व्हाट आर द की फैक्टर्स इन द एनिमेशन स्पेशली फॉर द किड्स? Uh, do you specifically mean कि हमने एनिमेशन को ही क्यों चूज किया है for the नो आई मीन टू से कि एनिमेशन के अंदर किन चीज़ों का ख़ास Story. तौर पर ख़्याल रखना पड़ता है कि अगर आप एनिमेटेड वीडियो कर रहे हो तो उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें आपको स्पेसिफिकली See, the very first thing is the story itself, the engagement, जो असली engagement है वो story से आती है। और and then comes the graphics, The character, ठीक for है? example, if Yeah, you're exactly. what type of like character are you introducing? So also that's very important. ओके ओके तो इन की फैक्टर्स में जो है द स्टोरी इज़ देयर, द यानी उसके जो कैरेक्टर्स हैं, उनकी एंगेजमेंट, हाउ दे आर कैचिंग द अटेंशन ऑफ द किड्स। और उसके अलावा जो है एंड देन कम्स द स्टाइल, ठीक है? एक ये इम्प्रेशन जो है वो पाया जाता है कि जी वो 3D एनिमेशन, 3D इट्स नॉट लाइक दैट। व्हेन इट कम्स टू द एंगेजमेंट ऑफ द किड्स, जो स्टोरी लाइन है दैट्स इम्पोर्टेंट। हाँ, उसमें ये है कि बहरहाल वी हैव वेरी लो क्वालिटी प्रोडक्ट एंड अ गुड क्वालिटी 2D प्रोडक्ट एट द सेम टाइम। तो बच्चे जो हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं डिफरेंस को। तो Work on बहरहाल your या technique. Mainly work on your technique, work on your story. These are two very important topics, I think so. ओके अच्छा रिसेंटली ना काफ़ी ज़्यादा ये वीडियो कंज्यूम करने से कार्टून्स कंज्यूम करने के अलावा भी एक वीडियो गेम्स भी काफ़ी जो इंटरेक्टिंग वीडियो गेम्स है लाइक आई एम प्लेइंग अ गेम रिसेंटली उसके अंदर मतलब ये है कि देयर इज अ स्टोरी इन द गेम बट यू हैव टू चूज द एक्शंस ऑफ द पीपल तो वी विल लाइक होप कि इस्लाम किड्स टीवी इन फ्यूचर इस तरह का कोई कंटेंट बनाएगा क्योंकि गेम मार्केट इज अ ह्यूज मार्केट ओवरऑल Yes,
if we want to speak about that type of videos, for example, recently Netflix has been making such movies that are interactive movies, we call them, where you know decide where the storyline is going. So they, for example, there was the Baby Boss film. My kids was watching, they were watching, and they were like, you know, what are we gonna do next? Where is the character going? So this is very interesting. This is part of the future. So definitely, I think it's part of the whatever we are bringing next in the next phases, inshallah. ये अच्छा, आप एनिमेशन तो आप लोगों ने कर लिया, एनिमेशन और सिनेमा जो है यूजुअली मतलब जो है एक अभी इसके अंदर हमारे पास काफी एनिमेटेड है, जो स्पेशली बच्चों के लिए जब आप एनिमेशन करते हो तो आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस होते चैलेंजेस एनिमेशन के लिए इस चीज़ को देखते हुए कि अभी जो मेन चैलेंजेस, अब यहाँ पर वो जो स्कोप वाली बात आपने कही थी ना, इंडस्ट्री का ना होना, इट्स अ ह्यूज चैलेंज। आपकी सिनेमा इंडस्ट्री को आप ले लें, वो अपने आप में एक चैलेंजेस जो है फेस कर रही है, और उसके साथ आप फिर एनिमेशन के ऊपर जब आ जाएँ, तो आपने नोट किया होगा कि पिछले 10-15 साल में जो है वो गिनती की जो है फ़ीचर फ़िल्म्स बनी हैं बच्चों को लेके। तो और उनमें कुछ कामयाब हुई हैं, कुछ नॉर्मल रही हैं। अभी रिसेंटली भी मेरे ख़्याल से नेक्स्ट मंथ में अल्लाह यार एक एनिमेशन है, वो भी आने वाली है। तो लेकिन इनमें कोई भी ऐसा एलिमेंट आपको नज़र नहीं आता कि जो इंडस्ट्रियलाइज़्ड हो, या फिर आप कहें कि यार हमारे पास पाकिस्तान में एक चैनल है जो बच्चों के लिए ही है खाली। ठीक है, हमारे पास कार्टून नेटवर्क है, वो वही कंटेंट उर्दू में दे रहा है। हमारे पास निकलोडियन है, वो वही कंटेंट उर्दू में दे रहा है। वो कितना हमारे साथ अलाइन्ड है, कितना नहीं है, उसके बारे में कोई इदारा है ही भी नहीं कि जो देखे और उसको सुपरवाइज़ करे कि यार कौन-सी चीज़ मुनासिब है बच्चों को दिखाने के लिए, वो हर चीज़ अलाप-शलाप सब दिखा रहा है। हमारे पास किड ज़ोन है, ठीक है, वो सिलेक्टेड काम कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल वो कंटेंट भी वही है, वेस्टर्नाइज़्ड सारा कंटेंट है। हाउ सूटेबल इट इज़, हमें किसी भी एग्ज़िस्टिंग चैनल की भी कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं मिलती कि हाँ जी, ये लोकली सर्विस दे रहा है हमारे बच्चों को, तो मसलन वो लोकली उसके ऊपर कोई ना कोई सुपरविज़न या कोई प्रोटोकॉल हो जिसको फ़ॉलो कर रहे हों। ठीक है, दैट्स अ चैलेंज, ह्यूज चैलेंज। फिर इंडस्ट्री भी नहीं है। तो जब ये चीज़ें नहीं होंगी, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपको जो है वो प्रोडक्शन की अपॉर्च्युनिटीज़ भी बहुत कम मिलेंगी। तो जितने भी इस वक़्त पाकिस्तान में अक्सर स्टूडियोज़ हैं, दे आर प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज़, एनिमेशन सर्विसेज़ फॉर द फॉरेन कंपनीज़। लेकिन हमारे लोकल सतह पे क्योंकि कोई चैनल ही नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री ही नहीं है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो काम हो ही नहीं रहा। यूट्यूब के ऊपर कुछ चैनल्स हैं, जो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। बट दैट्स नॉट इनफ ऑब्वियसली, ठीक है ना? अ, यानी जिस क्वांटिटी के अंदर ये कंटेंट अच्छा होना चाहिए और क्वालिटी का, वो नहीं है इंडस्ट्री के मौजूद ना होने की वजह से। तो ज़ाहिर है कि फिर वो जो आप देखेंगे कि इंडस्ट्री ही नहीं है, तो फिर मुश्किल है इसमें सर्वाइव करना या इससे पैसे कमाना, तो इस तरफ फिर ज़्यादा लोग नहीं आते। तो सलाम किड्स टीवी का दैट्स वन ऑफ द थिंग्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि सलाम किड्स टीवी एस्टैब्लिश होने से पाकिस्तान की जो एनिमेशन और कार्टून इंडस्ट्री है, वो बहुत बूस्ट करेगी इंशाल्लाह। And I think one of the also challenges that we are facing is the awareness of parents. So we still need to raise that awareness, that the parents would come and say, no, this is not the content that we want for our kids. So there's no like movement in the society where people would come and actually say that we don't want this for our kids. Maybe they think about it in their heads, but they would just think that there's no alternative, we cannot do anything. But no, we can do. So we are here to do something, to do that change, to create that movement of something new that would align with our culture. And this is how our kids won't need to consume that type of content anymore. So I think awareness is one of the challenges. The media literacy for the yes. parents specifically, that's also needed. तो एनिमेशन बनाने से लेकर सोशल अवेयरनेस पेरेंट्स की, और ख़ासकर मीडिया लिटरेसी, ठीक है ना? तो ये चीज़, और आपको इंशाल्लाह वी आर आल्सो प्लानिंग टू स्टार्ट विद आवर पॉडकास्ट फॉर सलाम किड्स टीवी, और वो इसी मकसद को लेके होगा कि पेरेंट्स के हवाले से हम उनको टारगेट करेंगे, पेरेंट्स को इनवाइट करेंगे, ट्रेनर्स, टीचर्स, कोचेस, और बहुत पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह से बहुत अच्छे ट्रेनर्स और कोचेस हैं जो इस हवाले से बात करते हैं। But they're not one. That's the idea. Yeah, so That's one of we'll the try to things, bring yes. them all at one platform. Yes. और जो कि, और हम उसको इस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं कि
जहाँ पर जो है ना, क्योंकि आप अपने बच्चों की तरबियत ऐसे कर दें कि बच्चे खुद फिर आइडेंटिफाई करें कि हमने Yes. कौन सी चीज़ देखनी है और कौन सी चीज़ मुनासिब नहीं है। और हमारे माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं और 3 साल से लेकर जो है वो 11 साल तक। तो अब वो सारे फ़ेज़ेज़ को हम एट अ टाइम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनकी तरबियत हम लोग कर रहे हैं। तो अ, सो वी नो द फ़ॉर्मूला जो अप्लाई किया जा सकता है एंड इट्स प्रैक्टिकल, क्योंकि हमने उसको आज़माया हुआ है। So now तो our 11 years old kid, ही इज़ द सुपरवाइज़र। yes, he supervises. He Okay. supervises the content. He would be like, "No, you're not watching this. This is not good for us. Let us choose something else." So they know what they should watch or what they shouldn't watch. They know, for example, they don't watch ads at all. They just skip the ads because they know the ads are not good for us. You know, they're trying to sell us things that maybe sometimes they're not true. So this, you know, if we bring our kids this way, they would help us in that process also. ठीक है ना? अभी फॉर एग्ज़ाम्पल आपके इस पॉडकास्ट के लिए हम बच्चों को घर छोड़ के आए हुए हैं, ठीक है ना? तो उनके सर पे कोई नहीं है, दे आर ऑफ देयर ओन, और उनके हाथ में टैबलेट्स भी हैं, Okay. टीवी भी है, और बट वी हैव आवर एल्डेस्ट सन जो इस वक़्त 10 साढ़े 10 साल का है। तो उसको पता है कि जो 3 बहनें हैं छोटी, उनके हाथ में जब मोबाइल आएगा तो हाउ ही इज़ सपोज्ड टू बी सुपरवाइज़िंग देम, और उनको खुद भी पता है कि हाँ जी। तो जिस तरह से एक इंप्रेशन पाया जाता है कि जी अच्छा वो एड्स जो हैं मुज़िर हैं बच्चों के लिए, तो जी वो एप्लीकेशन है जो एड्स हटा देती है। अच्छा, फिर एक एप्लीकेशन है जो पेरेंट्स को जो है ना एज़ सेफगार्ड ऊपर बिठा के रखेगी, ठीक है ना? ये सारी चीज़ें जो हैं इफ़ेक्टिव हैं, लेकिन अल्टीमेटली जस्ट थिंक अबाउट इट, इफ फॉर अ सिंगल टाइम और अ मिनट और एन आवर, इफ दोज़ रिस्ट्रिक्शंस और दोज़ लिमिटेशंस आर नॉट देयर, क्या आपके बच्चे को इतना शऊर है? If they're using someone else's mobile, for example, या their nana मिसाल के तौर nani's पे, mobile, for ठीक है, example, दादी ने पकड़ा दिया मोबाइल, तो क्या उस बच्चे को शऊर है? सो या, so दैट्स द यू नो लाइक द टाइम वी आर स्पीकिंग ऑफ द मीडिया लिटरेसी, उसका जो है वो 3 साल वाला जो बच्चा है, उसको भी जो है ना, वो पता होना चाहिए और पता होता भी है कि क्या चीज़ ठीक है, क्या नहीं। तो हमारे अब जो माशाल्लाह से बच्चे हैं, उनके अंदर ये एहसास है कि वो कोई भी चीज़ देखने से पहले ना, वो पूछ लेते हैं, या वो भाई से पूछ लेते हैं, या फिर वो आके उनको पता है कि नॉट एवरीथिंग यू नो लाइक इज़ अलाउड टू बी वॉच्ड, दे कैन नॉट वॉच एनीथिंग, सो दे जस्ट कम एंड वेरीफाई कि ये जो है ना सही है, इज़ इट फाइन, कैन वी वॉच दिस? तो ये चीज़ जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों के लेवल पे और पेरेंट्स के लेवल पे तो बहरहाल Yes. बहुत ही ज़्यादा अहम है। ओके, माशाल्लाह यू हैव गुड किड्स। वैसे हर सारे बच्चे ऐसे नहीं होते हैं जी। कि मतलब आजकल तो मतलब उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी हैं। Oh, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर रियली टॉक्सिक। इस पे आपको हर तरह का कंटेंट आ रहा होता है जस्ट वन स्वाइप अवे, वो यही वजह है स्पेशली कि हम लोग जो टिकटॉक। है वो इसी वजह से जिस एज ग्रुप को हम लोग लेके चलेंगे इस प्लेटफ़ॉर्म से, दैट्स गोना बी दिस स्मॉल एज, ठीक है? ओके, क्योंकि जो हो चुका है, उसको आप जो है वो डंडे मार-मार के नहीं सुधार सकते। सो यू हैव टू यू नो लाइक वर्क फ्रॉम द ग्रास रूट्स ओके। yes. टू ब्रिंग द चेंज। तो बेसिकली आपको स्टार्टअप के अंदर क्या-क्या मुश्किलात हैं? मैं स्टार्टअप बहुत ज़्यादा वर्ल्ड बोल के रहा हूँ अंदर वैसे आप। पाकिस्तान में। 5 seconds. I think one of the main problems that we're facing as a startup is that, for example, if you want to speak about investors, not everyone understands the importance of the startup, maybe, and even the business model of the startup. So they would be like, how, why? We try to explain it because they don't have that experience. It takes us so much like effort to come and explain what is it, how is it going to work, what is its importance. So they are used to, for example, technological startups or agriculture startups, especially here in Faisalabad. So I think that's one of the main challenges that we're facing now. सी जनरली ऑन नेशनल स्केल, अभी तक पाकिस्तान का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, वो अभी एक ग्रोथ पीरियड से गुज़र रहा है, वो अभी भी इतना एस्टैब्लिश्ड नहीं है, तो हम उसको कसूरवार नहीं ठहरा सकते। चैलेंजेस बहुत हैं इसमें, और इकोनॉमिकल कंडीशन आपके सामने है, Mm, जहाँ पर लोग बहुत एहतियात के साथ जो है, जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड बिज़नेसेस हैं, वो जो है अनफॉर्चुनेटली इस वक़्त यू नो लाइक दे आर एट द ब्रिंक ऑफ यू नो लाइक break. या एग्ज़ैक्टली कोलैप्स। तो ऐसी सिचुएशन में बहरहाल स्टार्टअप्स को लेके, क्योंकि व्हेनेवर वी आर स्पीकिंग ऑफ स्टार्टअप्स एंड दिस इकोसिस्टम एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तो वो इट्स ऑल अबाउट वेंचर्स, इट्स ऑल अबाउट या रिस्किंग द मनी। तो ऐसे हालात में ज़ाहिर-सी बात है कि एक
बिलियनर भी होगा वो भी जो है ना एहतियात से ही कदम उठाएगा। वो भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहेगा। और एक दूसरी मैं इसी की तरफ आने लगा था अनफॉर्चुनेटली कि दूसरा फिर ये कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से रियल एस्टेट में काफ़ी जो है, तो बहरहाल द थिंग्स आर चेंजिंग एंड वी आर होपफुल कि इस तरफ आ रहे हैं लोग, वेंचर कैपिटलिस्ट आ रहे हैं इस तरफ, रुझान जो है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन अभी भी बहरहाल चैलेंज है। मसलन आपके हमसाए मुल्क में जिस तरह से काफ़ी ग्रो कर चुका है ये कल्चर है इंडिया में फॉर एग्जांपल, यहाँ पाकिस्तान में अभी तक जो है वो नहीं है। बहरहाल चैलेंजेस हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि विद इन नो टाइम जो है काफ़ी अच्छा हमें जो है इसका वो फ्यूचर नज़र आ रहा है, और उम्मीद है कि इस प्लेटफॉर्म को लेके भी देयर वुड बी पीपल हु वुड अल्टीमेटली कम एंड इन्वेस्ट इन इट इंशाल्लाह। Okay, thank you so much for coming with us. बातें तो मेरे पास अभी भी बहुत हैं. I want to know more about the Salam Kids TV and you guys. MashaAllah, you guys are doing amazing work. You have a Thank you so great much. vision, and we say you best of luck from the whole the team of our Founders Kahani podcast. और फाइनली आप लोग इंक्यूबेशन का भी पार्ट है, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर फैसलाबाद का भी, और उन्होंने अपना एक थर्ड कोहॉर्ट भी लॉन्च किया है. सो व्हाट एडवाइस डू यू गिव टू द स्टार्टअप्स और स्टूडेंट कि वो एनआईसी में अप्लाई करें, और आप लोगों को एनआईसी ने किस तरह से हेल्प आउट किया अपनी स्टार्टअप में? I think definitely apply. If you have an idea and you want to work on it, definitely apply. Because, you know, at NIC, they work on the idea with you. They work on the business model with you. They bring you the connections that you might need to bring your startup up. They're so helpful from all of the sides. Like the time when we say mentors, they are real mentors for you that would come and guide you the right way on what are you supposed to do with your startup so that your startup won't fail mainly. So you need that mentor in every, you know, part of your business. So why not come and learn from the people who are the experts? So this is what we did. I mean, now at NIC, one of the most important things that we're getting is their guidance on how to do the things, what to do with. They're giving us, you know, very good connections with the experts in the market, and this is how we are evolving. We have evolved our idea very very much since the beginning until now. Okay. या दैट वाज सो हेल्पफुल। Yeah. और कई आपको जो है ना असम्पशंस होती हैं अपने आइडिया को लेके कि जी वाह जी अब प्लान हो जाएगा, ये हो वही जाएगा, वो हो जाएगा, मचाएंगे। तबाही मचा देंगे। सो द कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एनालिसिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है ना? तो वो ज़ाहिर है कि आपको इस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो मेंटर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, वो जब आपको मिलेंगे लाइक इट्स बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस सो फार, और इंशाल्लाह आगे भी। तो अभी जो कोहोर्ट 3 है उसके हवाले से there is a message that I would like to give to the young people, the university students जो स्पेशली अपने थीसिस पे काम कर रहे होंगे. So try to work on something that identifies a problem in our society and tries to solve it. खाली सिर्फ इस नीयत से जो है वो डिग्री लेने के लिए कि जी बस अपने थीसिस लिखने हैं और पास करके अपने ग्रेड्स लें, जाके नौकरी करें. तो थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, ऐसी चीज़ों पे काम करें जो एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई भी करे पाकिस्तान की सोसाइटी की, और उसको जो है फिर सॉल्व करने के लिए जो है एक सोल्यूशन भी प्रोवाइड करे. तो इस तरह के आइडियाज़ अगर आपके पास हैं तो ज़रूर अप्लाई करें एनआईसी में. बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस उनका जो है इस हवाले से रहेगा इंशाल्लाह. माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि यू नीड अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म. सो अगर आखिरी लास्ट मिनट में हम अपने शो की एक हमेशा जागती हुई रिवायत को भी पूरा कर लेते हैं. जस्ट यू हैव टू गिव वन वर्ड आंसर. अगर आपको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर एक दिन के लिए बना दिया जाए, व्हाट्स द फर्स्ट थिंग यू विल? I can't be a prime minister. I'm not Pakistani. Assume that you are. You can assume. What is it that you would like to आप तो change ज्यादा or- अच्छा बता सकती हैं ना कि हम एक पेट्रियोटिक होते हैं, पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं कहते. No. One of the main things that I would change in Pakistan, like work on, is Yeah. educational system, frankly. Okay. So I think it needs a lot of. And what is the answer? एक दिन का बना दें वैसे ना. प्राइम मिनिस्टर ही ज़्यादा वो है. देखिए मैं तो इस तरह के जो है ना रिस्क नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि जो ऑलरेडी हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ पिछले हो रहा है. Yeah, तो we will not anyway, talk about yeah, No politics.
So the question is political actually. Yeah, तो okay. प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको वाइस प्राइम मिनिस्टर के लिए जो है वो पॉलिटिकल होना पड़ेगा. uh, just like we said, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. और उसके अंदर जो सबसे बड़ा एलिमेंट है दैट्स अ लीडरशिप. ठीक है. तो मैं जिस एलिमेंट के ऊपर काम करना चाहूँगा वो बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, मेरी ये कोशिश होगी कि मैं अपने जैसे जो है ना मज़ीद जो आने वाली उसमें जो है ना वो ऐसे लीडरशिप जो है ना वो लीडर्स बना दूँ कि जो उस लेगेसी को कंटिन्यू रख पाएँ. Okay. ठीक है. सो द लीडरशिप एलिमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वो उसी से ही आएगा, द एजुकेशन सिस्टम और जो तरबियत और इन तमाम चीज़ों से. सो लीडरशिप इज़ समथिंग दैट आई वुड लाइक टू वर्क ऑन और वो ऑटोमेटिकली जो है इकोनॉमी को भी जो है हल कर देगा, आपके एजुकेशन सिस्टम को भी हल कर देगा. तो या Okay, nice answer कि आप अपने जैसे और लीडर्स पैदा कर देंगे. Thank you so much guys for listening to us और see you next time with new founder or new कहानियाँ.